Assalamu alaikum everybody. I hope you guys are doing well. Today we are going to do midterm revision for grade 10. So I'm just waiting for the students, everybody to join in, and then we'll begin. I also have a list of topics that I think we should be working on. So I'll be happy to answer your question. If you have any, feel free to WhatsApp. So this is more like I'm here to help you out with whatever questions you have, whatever concepts you want to review. So just let me know. Okay. Assalamu alaikum Hassan, assalamu alaikum Mohammed. Good to see you guys. Good to see you guys. I'm just waiting for everybody to join in और फिर करते हैं. Assalamu alaikum Abdullah, assalamu alaikum Ali, assalamu alaikum Mama. Hello Noor. Walaikum assalam. Assalamu alaikum Quddus. Hello FIFA gamer. Assalamu alaikum Lishwa. Okay, so I have a list of concepts that you guys mentioned that you wanted to review. So this is grade 9 and grade 10 syllabus. So I think it would be a good idea if you guys tell me what do you want to review first. So what I'll do is that पहले तो हम उसका concept देख लेते हैं ना, फिर हम mainly उसको देखेंगे कि इसमें question किस तरह से आते हैं. And then obviously we'll do those questions. एक दो question मैं आपको करवा दूंगा, and that way you will be familiar with what you need to be able to do in the exam. So the topics that I have is grade 9 syllabus, which is obviously काफ़ी extensive है. So there's a video on grade 9 syllabus first term वाला जो सारा syllabus है जिसमें chemical bonding है, periodic table है. I would suggest कि वो आप video देख लेना if you have time. And then there is moles and energy from reaction and rate of reaction. Moles में obviously the concept is really simple, but उसके questions बहुत ज़्यादा varied किस्म के आते हैं. So the more question that you do, the more practice you do, उतना ज़्यादा बेहतर है. उसके लिए I would suggest कि moles की एक पूरी playlist है, उसमें छोटी छोटी videos हैं. So you don't have to go through the whole thing. Obviously इतना time नहीं होगा आप लोगों के पास. But just focus on the question practice. जो questions, जो worksheets practice हुई है ना, there are 3 main videos. अभी Senpai, it's a startup that I collaborated with. So Senpai के साथ मैंने 3 videos बनाई थी. Those 3 videos will take you through the whole concept of moles, हर तरह का question. So I would suggest कि आप इसी channel पे just Google, इसी channel पे search Senpai Ahmed Bokhari and you will be able to find that. If you have the Senpai app, these guys are doing amazing work, तो आप उसको भी देख सकते हो. No, this video is not sponsored by Senpai. Okay. Can we do yield first? Sure. Yield the idea is simple. You have done the whole stoichiometry. आपने question solve किया, सब कुछ हुआ. But at the end, you figure out कि practically जब यही experiment हम करते हैं, we don't end up with what the value is supposed to be. So I'll give you a simple question और उससे हम अंदाज़ा लगाएंगे कि yield कैसे होती है. Okay. So here's a question. Iron is reacted
we'll say excess iron is reacted with 20 cm cube of okay, so that's a reaction that's happening. And now, obviously, this is going to produce some chloride. So uh, it says that 0.5 cm cube of hydrogen gas is produced. Find the percentage yield. Now, the first thing you need to do for any question is to first write the equation. So अब इस क्वेश्चन को जरा समझते हैं. वो कह रहा है excess iron is used. Excess iron का मतलब यहाँ पे ये है that excess is anything that you can ignore. The concentration of that thing is constant. मतलब वो इतनी ज़्यादा है that it doesn't really matter कि वो उसमें से कितना use up हो जाए, वो है ही बहुत ज़्यादा. So we don't need to worry about the amount of that thing. But it's reactive with 20 cm cube of 0.5 mole per dm. So what exactly is this? 20 cm cube is the volume and 0.5 moles per dm cube is the concentration. And what is the concentration of? This is of HCl. Similarly, we have volume of hydrogen gas over here. So let me write the equation now. So the equation is going to be iron plus HCl produces, I think this will produce FeCl2, FeCl3 शायद नहीं produce कर पाएगा. But never mind. Let's do FeCl2. Okay. So now we balance the equation. We get 2 of this. Okay. So here's the thing. What I would do is that I will write the information right with the equation. So iska mere paas volume is 20 cm cube, concentration is 0.5 moles per dm cube. Hydrogen का वो बोल रहा है कि 0.5 cm cube of hydrogen is used. Now here's the thing. How do you know कि ये yield के question में आ रहे हैं? Because एक तो वो obviously आपको बता देगा, but other than that उसने आपको product भी बताया होगा. In any question on yield, they will give you the product. Similarly, in any question on limiting reactant, they'll give you the information of the both the reactants. मतलब 1, 2, 3 different reactants हो सकते हैं, वो दोनों की information आपको provide कर देंगे. And when they do that, that basically implies that this might be a question on limiting reactant. Okay? Yeah. But let's come back to this. So we need to figure out the volume of this. Why? Because they have told us कि इतनी volume तो है. अब हमने देखना है कि कितनी वॉल्यूम होनी चाहिए थी. सो लेट्स डू दैट. सो वॉल्यूम इज व्हाट वी आर गोइंग टू फिगर आउट. जिस चीज की इंफॉर्मेशन उसने आपको दी है ना, दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू फिगर आउट फॉर परसेंटेज यील्ड. मतलब उसने हमें वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन बताया, तो मैं वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करूंगा. ओके, सो दैट इज द वे टू डील विद परसेंटेज यील्ड क्वेश्चन. जिस चीज की इंफॉर्मेशन उसने प्रोवाइड की है फ्रॉम द प्रोडक्ट, पहले तो आपको प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देगा एंड देन दिल गिव यू द इंफॉर्मेशन वॉल्यूम, मास, कॉन्सेंट्रेशन, समथिंग ऑफ द प्रोडक्ट. You will use that and then figure that out for yourself. So volume मैं खुद से calculate करता हूँ. So I'll do the ratio, or I don't know which method you are more familiar with. I'll do both the methods. So हम पहले इसको देख लेते हैं. HCl है n equal to Cv. So n equal to Cv. That gives me 20 divided by 1000. That's the volume. Always divided by 1000 because it's same cube. Times 0.5, I get 0.01, I guess. Yeah. If you have a calculator, just help me out here. So 0.01 moles of HCl is what we have. This should produce, based on 2:1 mole ratio, like 2 of this produces 1 of that. So 0.01 should produce X of that. Okay. So let me do that, and 2x is equal to 0.01, x is going to be 0.005 moles. So I have 0.005 moles of hydrogen gas being produced. Okay, so what is 0.005 moles? What's the volume of this? Volume is going to be 24 dm cube times 0.005, or if you want to do it in cm cube, so you multiply it by 1000, because 24 dm cube is 24,000 cm cube. So I do that, I should be getting, what is it? 12, 0.12, if I'm not wrong. So 0.005 times 24, 0.12. Okay, 0.12 cm cube, dm cube
is what I should be getting. So here's the thing, what did I do? उसने yield के बारे में पूछा ना, so I solved it for yield myself. मैंने जो भी उसके इन्फॉर्मेशन बताई थी, उसने बोला था वॉल्यूम है और yield निकाल दो, तो मैंने पहले वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है, फिर yield निकालनी है. वो अगर मुझे मोल्स देता तो मैं मोल्स कैलकुलेट करता और फिर yield निकालता. वो मुझे मैथ्स देता, मैं पहले मैथ्स कैलकुलेट करता, फिर वो मैं yield निकालता. So that's what I'm going to do. I already have this, and I know that this says 0.5 cm cube of hydrogen is produced, and I have 0.12 dm cube. So first, for consistency, let's make the units same. So I have 120 cm cube, which is 0.12 dm cube. So I'll be like 0.5 cm cube is produced when 120 cm cube should be produced. I'll multiply that by 100%. It's a terrible yield. मेरे पास जो भी percentage yield आ जाएगी, that is what I'll write. So how do I know that HCl had 2 moles? I didn't. I just balanced the equation. I did not have 2 moles. The ratio was 2 to 1. I took it from the equation. Okay. So you have to balance the equation to figure this ratio out. Okay. So it's not 2 moles. It's just that if there were 2 moles, I'll get 1 mole. I have 0.01 moles, so I'll get X moles. So it's kind of like a comparison thing. That's what helps us out. Okay, so I hope now you understand how to calculate a question on yield. So again, any question on yield will start by giving you some information about a product. And they will tell you something about the product. कि उसका इतना mass आया है, उसका इतना volume आया है, उसके इतने moles आए हैं. You will calculate the same thing yourself. And then at the end, use the given information to find the yield. So a big hint, जो भी उसने बताना है, आपने वही calculate करना है, और फिर उसकी yield निकाल लेनी है. Okay? All right. Any other question that you want to go over? Kudus, I have no idea what you're going through right now, but this is a pretty hilarious thing. Okay. For separation and purification, do we need to memorize that entire table? What table? Can you WhatsApp that to me? What table are you talking about? Another question on yield. Okay, hold on. Let me get it from past papers. Okay, so this is another question. They have given us the equation in this question. So Na2CO3 plus 2HCl produces 2NaCl plus CO2 plus H2O. The question says that okay, so let's understand the question. They have given us the equation and they're asking us that what is the mass of sodium carbonate, this thing, used to produce volume of carbon dioxide. So as I've told you, जो भी उसने information देनी है, आपने वही चीज calculate करनी है. उसने आपको volume दिया ना, we will calculate the volume of carbon dioxide. ठीक है, जो इससे use होनी चाहिए.
बट वो कह रहा है कि 100 cm³ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड, परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन वाज 75%. ठीक है, अब हमें लेट्स रिव्यू दिस क्वेश्चन. कैलकुलेट मास ऑफ दिस यूज्ड टू प्रोड्यूस 100 cm³ CO2. वो तो सिंपली हम निकाल लेंगे. व्हेन एक्सेस HCl वाज रिएक्टेड. अब ये ट्रिकी क्वेश्चन है. हियर्स द थिंग, दिस 100 cm³ is what is practically produced. एक्चुअली में ये प्रोड्यूस नहीं हुई, हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि एक्चुअली में कितनी होनी चाहिए थी. लाइक द theoretical value. This is the practical value. We need to calculate the theoretical value. Which means if the yield is 75%, then this 100 cm³, it's the 75%. So 100% क्या है? That's what we will calculate. Do you get that? They have basically told us that you had 100 cm³ at a yield of 75%. So we will calculate that at a yield of 100% क्या होनी चाहिए. So जो भी उसने आपको information दी है वो आपने पहले खुद calculate करनी है. So we'll do that. So 100 cm³ is 75%. So if this was 100%, then we'll get X. So X is going to be 10,000 over 75. What is that? Okay, 133 cm³. Okay, so we already know the yield. We don't need to calculate the yield in this case. We already know the yield. We need to figure out how much was supposed to be produced. ठीक है, मतलब हम कैलकुलेशन से देखेंगे कितनी प्रोड्यूस होनी चाहिए थी और हुई है 100 cm³. So we will calculate that thing. So हमने assume किया that whenever you do mole questions you get the answer for 100% yield. फिर एग्जामिनर आपको बताता है कि प्रैक्टिकली क्या हुआ है. So 75% yield पे जो भी आंसर आएगा, हमने तो 100% yield को क्वेश्चन में यूज करना होता है. So 133. So we'll take 133 cm³ of this thing. That's the volume. And I want to figure out the mass of this thing. Okay. So is this point clear? That they gave us the information for 75%. We need to calculate the information of 100% because that is what हमारा जो reaction end पे आंसर आना चाहिए वो होना चाहिए. Is that point clear? Okay. All right. Now let's. So 133 ये था, sodium carbonate है. So I'm going to use the old school method of solving this. I will first figure out the number of moles of carbon dioxide. So 133. First of all, I'll convert that to 1000 cm³ से dm³ में convert हो जाएगा. And then I know that 1 mole is going to be 1 mole of any gas produces 24,000. So I'll simply divide this by 24,000. So what do you get? 133 divided by 24,000, that is 0.00554 mole. So that is how many moles of this thing are being produced. Okay, so I have moles now. अगर मैं क्वेश्चन में देखूं तो मेरे पास मोल रेशियो है. If I had 1 mole of this, I will get 1 mole of that. जिसका मतलब है कि जो भी मेरे पास इसके मोल्स होंगे वही इसके मोल्स भी होंगे. Because if this is 1 mole, then that produces 1 mole. So 0.0054 will produce 0.0054. So इसका मतलब है this is the same as the number of moles of sodium carbonate. So this is going to be 0.00554. If you don't get it, just remember you use the mole ratio. 1 produces 1. So 0.00544 produces the same thing. Okay, so you can show that step if you want. इसके कोई as such marks नहीं होंगे. And now that I know the number of moles, how do I know the mass? Really simple. Mass is this thing multiplied by mR. I'll calculate the mR for sodium carbonate. This is going to be 2 times 23 plus 12 plus 3 times 16. So that is going to be 106. Yeah, 106. So 106 times 0.00554, whatever that answer comes out to be. All right. So that's another completely opposite kind of a question for yield. What is the formula you use to find the moles? In this case over here, this one,
I use the formula volume divided by 24,000. Why? Because volume is in cm cube. I divided by 24,000 because 24,000 is this volume of 1 mole in cm cube. Now this only applies to gases. Remember, number of moles is volume over 24,000 only for gases in cm cube. अगर वो dm cube में होता ना, तो we would simply divide it by 24, not 24,000. So that's the kind of thing you need to remember. But over here, I did not use any formula. I used the mole ratio. Over here, I'm using the formula mass equals to moles. Sorry, mole is mass over mr, so mass equal to mole times mr. Okay? Yeah. Any other questions? Can you explain how to attack the question again? शुरू कैसे करते हैं? Okay, sure. That's a very good question actually. So here's the thing. आपको किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं? एक क्वेश्चन आपको आता है जिसमें मास, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, ये सारे का सारा आपने कंपेयर करना होता है, जिसमें कोई एक्वस सोल्यूशन नहीं होता. If there is no aqueous solution, that means you're dealing with pure substances. That means आप उसके ऊपर डायरेक्ट फॉर्मूलाज लगा सकते हो, सारा कुछ कर सकते हो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. मोल्स इज मास ओवर एमआर, मोल्स इज वॉल्यूम ओवर 24, मोल्स इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स ओवर एवोगाड्रोस नंबर, वो सारा कुछ कर सकते हो. एंड देन यू हैव थिंग्स दैट आर एक्वस. द थिंग्स दैट आर एक्वस आर इम्प्योर. वो सोल्यूशंस होते हैं, वो HCl का एक्वस सोल्यूशन हो सकता है, दे डिजॉल्व इन वाटर. एक तो उनकी इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है, उसमें उसने कॉन्सेंट्रेशन बताई होती है इन मोल्स पर डीएम क्यूब, उसमें उसने उसका मोल्स बताया होता है. सो वहाँ पर यूज द फॉर्मूला n इक्वल टू सी वी right away. Just figure out its moles, because once you know the moles of that thing, you can then use that information to find out other things. So the moment you see कि concentration है, that clearly shows कि aqueous solution है, और उसके अंदर आपको n equal to cv का formula लगाना पड़ेगा. Okay, so that's how you work with the data. I always write the data with my equation. So जो भी equation के अंदर जो चीज़ है जिसकी information मुझे पता है, I always write the data with it in case I need to use it later on. ठीक है? So that's the second point. कि first point, आप direct formula लगता है लगाओ, नहीं लगता n equal to cv for aqueous solution. Second point, write your data, collect it all under the equation, ताकि आपको जो भी चीज़ चाहिए, you don't have to read the question multiple times. आपको वहीं पे पता लग जाए. Third, see if the question is limiting reactant or if it is percentage yield. Okay? How would you figure it out? Limiting reactant का मतलब क्या होता है कि one product is running out and stopping the reaction before everything else. So how would you figure it out? Limiting reactant को calculate करने के hint ये है that they will give you information of two reactants. For example, अगर यही question में वो हमें कहता that sodium carbonate, 25 gram of sodium carbonate reacted with 20 cm cube of 0.5 moles per dm cube, जो भी वो information देता, but वो information दोनों reactants की देता. If you are getting information of both the things on the left side, O levels में दो से ज़्यादा usually नहीं होते left side पे, so if you're getting information of both of them, that shows that this is a limiting reactant question. So the third step or third point is, if it is a limiting reactant step, if it is a limiting reactant thing, go on, find the limiting reactant first. There's a video on how to find limiting reactant. There are basically two ways of doing that. I can go over that if you want, but abhi ke liye, let's park that for a while. So now you know the limiting reactant. Ignore the other thing. Work out from that limiting reactant value for the rest of the question. आपने उसको use करना. अच्छा, अगर आपको limiting reactant question नहीं मिला है, उसने direct आपको कोई information दे दी है, limiting reactant खुद ही बता दिया उसने, then obviously you get down to what you need to do. So उसमें moles में it's always a three-pronged process. Stoichiometry में वो करता क्या है? दो चीज़ें होती हैं जिनको वो compare कर रहा होता है. They give you the information of one substance. They ask you the information of the other substance. So this is your fourth point, okay? They give you the information of first substance. They ask you the information of the other substance. वो जो first substance जिसकी उसने information दी है ना, that's usually the limiting reactant. आपने क्या करना है? उसके moles calculate कर लो. जो भी first substance है, उसके moles calculate कर लो. That's step one. Step two. Use mole ratio to figure out moles of the other thing.
सो पहले वाले की मोल्स आपने कैलकुलेट किया, स्टेप 1. स्टेप 2, यूज दैट टू फाइंड मोल्स ऑफ द सेकेंड थिंग. स्टेप 3, फाइंड योर आंसर. जब आपको दूसरी चीज़ की मोल्स मिल गए हैं तो आप उसके वॉल्यूम ओवर 24 कर सकते हो, मैस ओवर एमआर कर सकते हो, जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए आप उससे मोल से कैलकुलेट कर सकते हो. ओके, सो दैट्स अ 3-स्टेप अप्रोच टू एनी मोल क्वेश्चन. कि आपने दो चीज़ों की इंफॉर्मेशन होगी, एक की गिवन होगी, एक की फिगर आउट करनी होगी. द वन दैट्स गिवन, फाइंड द मोल्स. सो इसको अगर मैं यहाँ पे इलस्ट्रेट करना चाहूँ, सो इट्स अ 3-स्टेप प्रोसेस. 1, 2, 3. Your journey starts here. They give you the information of the first thing. You figure out moles of the first thing. Then you use mole ratio to figure out moles of the second thing. And then you arrive at your answer through formulas. So, आपको ये सारा जर्नी करना है. जैसे यहाँ पे हमें इसकी वॉल्यूम गिवन थी, मैंने उससे वॉल्यूम कैलकुलेट की, उससे मैंने मोल्स निकाले, उन मोल से मैंने इसके मोल्स निकाले और फिर इसके मैथ्स या इसका आंसर निकाल लिया. ओके, सिमिलरली अगर मैंने ये वाला क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो उसने मुझे HCl की इंफॉर्मेशन दी थी, तो मैंने सबसे पहले HCl के मोल्स निकाले, मैंने उसको यूज़ करके दूसरी चीज़ों के साथ मोल रेशो किया टू फिगर आउट द मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, एंड देन जब वो मेरे पास आ गया मैंने उसका आंसर निकाल लिया, वॉल्यूम निकाल लिया. सो एनी स्टोइकोमेट्री क्वेश्चन इज जस्ट दैट. ये आपने जर्नी ट्रैवल करना है इन एनी मोल क्वेश्चन. अच्छा, हाउ वुड यू नो यील्ड का क्वेश्चन? यील्ड का क्वेश्चन में आई जस्ट टोल्ड यू दैट इन अ क्वेश्चन ऑन यील्ड यू आर गिवन इन्फॉर्मेशन, लेकिन आपने उसको ट्रस्ट नहीं करना है. यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द सेम थिंग फॉर योर सेल्फ. जैसे इस क्वेश्चन में दे गेव मी द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन और मैंने वही निकाल लिया. डू यू सी दैट? मैंने वही कैलकुलेट किया. सिमिलरली इन दिस क्वेश्चन दे गेव मी द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने वही खुद से कैलकुलेट किया कि वॉल्यूम 133 होगी, एंड देन आई यूज दैट टू फिगर आउट द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन. ओके, सो आई होप दैट वाज हेल्पफुल. These were both stoichiometry, Abdullah, but sure, let me get another question for you. I can't find it. Hold on. Oh, I'm looking in the A-level solid question. Sorry. Okay, so here's a question. Again, equation is given to us. Okay. Excess zinc carbonate reacts with 100 cm cube of 0.5. ये काफ़ी आसान सवाल है. Mole per dm cube H2SO4. Find the volume of carbon dioxide produced. Pretty straightforward question, बहुत आसान है. अच्छा, so मैंने आपसे मेथड बताया था. This three-prong approach. You start with the information, find the moles of the first thing, find the moles of the second thing, get to your answer.
Okay, so what is my first thing? Excess zinc carbonate? No, because this is excess, so I'm gonna ignore that. I don't care about it because the excess mein. So clearly this is my thing that is limiting reactant. So let me solve that now. So I'm going to find n equal to Cv. मैंने आपसे बोला था the moment you see a solution उसका n equal to Cv लगाओ, find the moles. So 0.5 times 100 cm cube, so that's 100 over 1000. That's going to be 0.05 moles if I'm not wrong. Yeah, so I have 0.05 moles of H2SO4. Now I need to figure out the second thing. The second thing is carbon dioxide. तो मुझे उसकी volume निकालनी है. But step क्या था? You start with moles of the first thing, moles of the second thing. So उसके moles कैसे calculate करूँगा? 1 mole of H2SO4 produces 1 mole of carbon dioxide. 1 mole of this produces 1 mole of that. I ignore everything else. So 0.005 will obviously produce 0.05. Now that I have the moles, I find the answer. मुझे volume चाहिए. So volume is going to be 24 times 0.05, which is 0.12 dm cube. Okay, so that's the answer. Okay, I've got a question on WhatsApp. Let me see. Ethyl propanoate. Okay, ignore that. वो मैंने. Wait a minute. Did you get that paper? Okay. This is organic chemistry. The formula that you've sent me, but technically the question is not of organic chemistry. The question is of percentage yield. But ignore that. That was my mistake. I added it to the paper. I thought कि आप लोग कर लोगे, but it's fine. Ignores. Do you see the equation now? Sure, Abdullah. You limiting reactant wala question. Okay, hold on. Let me find one. Okay, so this is a question on limiting reactant. And the equation is given. Okay. Now, limiting reactant को calculate करने के usually there is a method that's taught के पहले आप दोनों के moles निकालते हैं और figure out करते हैं कि अच्छा इसका 1 mole होगा तो दूसरे कितने होंगे और then you compare कि अच्छा किसका ज़्यादा है और किसका कम है. I honestly think that that's kind of confusing and students make a lot of mistake in that process. So I have my own method and just bear with me. Okay? So I call this method a least product method. Okay? Least product method. So here's what I'm going to do. I'm going to pick any one of these two things. और मैं उससे compare करूँगा पहले इसको और आंसर निकालूंगा और फिर मैं इसको कंपेयर करूंगा और उसका आंसर निकालूंगा और जो कम आंसर आएगा ना दैट इज गोइंग टू बी माय लिमिटिंग रिएक्टेंट. ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन अगेन. सॉरी, आई एम गोइंग टू पिक एनी वन ऑफ द प्रोडक्ट्स. इट्स अप टू मी. कोई एक आपकी मर्जी है, कोई मर्जी उठा लो. लेट्स से आई पिक दिस क्योंकि उसने भी तो वही पूछा है. आई एम गोइंग टू फर्स्ट कंपेयर इट टू दिस and then I'm going to compare the same thing with this और जिससे मेरा आंसर कम आएगा that's going to be my limiting reactant, that's going to be my answer. Okay, so least product method.
So I'm going to use AGI and I'm going to calculate this. Okay, I need a periodic table. Hold on. I'll tell you what I mean by compare. Okay, so the question wants me to find the mass of silver iodide made. So I'll start with what information I have. Volume is 50, concentration is 1, volume is 30, concentration is 2, mass is what I have to figure out. So if you write your information like that, it really helps out. Okay, so I'm going to start with potassium iodide. So potassium iodide is my first thing and AGI is my second thing. Okay, potassium iodide. What's the number of moles? Number of moles is 50 over 1000 times 1. So that is 0.05 moles. Next, mole ratio. 1 mole of this produces 1 mole of that. So 0.05 is going to produce 0.05 of that. Next step, I want to figure out the mass. Mass is going to be 0.05 multiplied by the MR. So the MR of silver iodide is, so silver is 107 and iodine is 127. So 107 plus 127, 234. 234 hota hai? Yep. So 234. So this will multiply it by, sorry, I don't have a calculator. 0.05, 11.7 grams. So I found my answer using the first reactant. Now I'm going to find the answer for AGI using the second reactant. Again, let's get started. Using the second reactant, number of moles is volume into concentration. So that's going to be 0.06. Now that means mole ratio is 1 to 1 again. So number of moles of AGI is obviously going to be 0.06. मुझे answer तो मिल गया है, but I'm still going to continue. And that means mass is going to be 0.06. Mass is moles times MR times 234 because मैं इसका mass निकाल रहा हूँ. So that will be 234 times 0.06, 14.04. Which one is smaller? This one, right? So I will say my reactant, limiting reactant is this because it gives me the least product. And my answer is this, जो limiting reactant के through आया. And there you go, कर लिया सवाल. So I really like this method. Moles का मैंने आपको बताया था कि when I was a student I really struggled with it. तो हर चीज़ का मैंने अपना ही तरीका बनाया है. But it really helps out and they always work. I have yet to find a case in which they will not work. So I think it will help you out. Didn't I find moles of both and compare? Yeah, you can do that. Yeah, but मुझे आज तक कोई बंदा नहीं मिला जो confused नहीं होता उस method से. But of course, that method is there. The other method, the traditional method of this finding the limiting reactant is कि पहले आप reactant निकालते हो फिर आप question solve करते हो. So I can show that to you as well. So उसमें हम क्या करेंगे? We will say कि okay, I have potassium iodide and silver nitrate. Let's figure out that what's the mole of the first one. So वो आ गया 0.05. So I'll be like, okay, 0.05 of one reactant will need X of the other one. So equation को देखते हैं. 1:1 है. So 1 requires 1. So 0.05 will require 0.05. And then you figure out, do you have 0.05 or do you need more to do that? So the moles of silver iodide right now, the moles of this thing are 0.06. And how much moles do you need? 0.05. So clearly you have more than what you need. So this is in excess, which means the other thing is limiting. And now that you know the limiting reactant, you can then move on and compare this with this and find your answer, whatever that comes out to be. Okay. So one method is least product method, where you find your answer through first reactant, then the second reactant, और जिसका answer कम आया वो आपका answer है. Either that or the second method is you first take the moles of both things, compare कि इसकी ये हैं तो दूसरे की कितनी चाहिए होंगी, और वो अगर ज़्यादा हैं तो वो एक्सेस में है और अगर वो कम है तो वो लिमिटिंग है.
So, okay. So again, no judgment. It's totally your choice. Whatever you're more comfortable with, whatever your little heart desires. Okay. Any other questions? So stoichiometry हो गया. Again, moles में अगर आपको अभी भी परेशानी है, attempt the 3 worksheets that are there. Just search Ahmed Bokhari, Senpai, और वो आपको मिल जाएगा. अस्सलाम वालेकुम याया. Okay. Any other questions? Okay, I have another question on WhatsApp. So the question goes, so it's a pretty straightforward question. You just have to focus on the formula. So 3 oxygen divided by the whole thing. So potassium plus chlorine plus 3 oxygen times 100%. That's how you find the percentage by mass. So 3 times 16 over, this is 39, this is 35.5, and this is 3 times 16 times 100%. जो भी आपका आंसर आएगा, that's your percentage by mass. So that's the first part of the question. The second part of the question is, calculate the maximum volume. So when they use the word maximum volume, इसका मतलब है कि आपने assume करना है कि 100% yield है. Volume of oxygen when 12.25 grams potassium chlorate is completely decomposed. Okay, so if I look at this equation, let me just copy it here. So I want to figure out the volume of this thing. I have mass of this thing, which is 12.25. So I'll use the 3-step approach. I will first find the number of moles of the first thing, then the number of moles of the second thing, and then I'll get to my answer. So number of moles of KClO3. Number of moles is mass 12.25 divided by MR. MR क्या होगा? 35.5 plus 39 plus 48, 122.5. So 122.5, that is clearly 0.1, right? We have 0.1 moles. Next step, moles of the other thing. 2 moles of this produces 3 of that. So 2 of this produces 3 of that. So 0.1 will produce X of that. X is going to be 0.15 moles, right? So 0.15 moles of oxygen gas. Now I need to find the volume. Volume is going to be moles multiplied by volume, 24, because एक क्या कहते हैं, एक मोल की 24 होती है. So just multiply it. I get 3.6 dm cube, and that's my answer. Okay, so I hope whoever sent it, I don't have his number saved, but I think this should help. Okay, what else? Any other questions? We are only doing grade 10 syllabus. The grade 9 syllabus we have already done. You can look it up. Just Google to, oh sorry, again Google कह देता हूँ. Just go to the channel और वहाँ पे grade 9 revision आपको अभी मिल जाएगा. grade 9 mid term revision आप ढूंढ लेना. Okay. Isn't it MR over mass? No, it's mass over MR. There is a reason for that. Basically हम ये कह रहे हैं कि हमें नहीं पता कितने मोल्स हैं, उसका इतना mass है divided by 1 mole का MR mass है, and then we forget to write 1 क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है. So that's how you get the formula. Okay, so it's always mass over MR because of that reason. Okay, Noor, you can send it to me. Maheen, which question do you want to see?
एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स क्वेश्चन. एसिड बेसिस में बहुत different types के questions आते हैं. So what kind of question do you want to review? Okay. Okay, so here's a question. Let me see, airdrop करता हूँ. Okay, so okay, so I hope you guys can see this. काफी छोटा है. Let me. I hope you can read it now. All right. Let's see. Dilute HCl was titrated with sodium carbonate solution. सारी information उसने दे दिया है. 10 cm cube of, so HCl के बारे में मुझे क्या पता है कि volume is 10, concentration is 0.1. They put it in conical flask. A few drops of methyl orange. So methyl orange का color आपको फौरन याद आना चाहिए that, sorry, methyl orange is pink or red in acid and yellow in alkali. The mixture was titrated with sodium carbonate solution, 16.2. So sodium carbonate solution, it is aqueous, or iski volume is 16.2 cm cube. So this is all the information that I have. What color would methyl orange be in HCl? So it's an acid, so pink लिख दें, red लिख दें. Next step, calculate how many moles of HCl were used. You have the information right here. So N equal to CV, that is 0.1 times 10 over 1000. So it is going to be 0.001. Yeah. Use your answer and the equation for the reaction to calculate the number of moles of sodium carbonate. So मुझे equation चाहिए इसकी. So HCl plus sodium carbonate produces NaCl plus water plus carbon dioxide. Balance कर लें. Okay, so I have the equation 2:1. Whenever they say use your answer or the equation, they're basically saying mole ratio calculate karo. So I have 2 of HCl produces 1 of sodium carbonate, as you can see in the equation here. Okay, so that means 0.001 of HCl will produce X, or will need to use X. So X is going to be 0.0005 moles. Okay, I know the image is not clear, that's why I'm reading the questions out. Use your answer to calculate the concentration of sodium carbonate. I just figured out the moles, that was 0.0005, और मुझे concentration चाहिए. Not really a problem. N equal to CV होता है. So concentration is number of moles over volume. It is number of moles is 0.0005. Volume is 16.2 cm cube. So I will first need to convert it to dm cube. So 16.2 divided by 1000. I'll just put it in a calculator. मुझे इसका answer मिल जाएगा. Okay, so that's a paper 4 question for acids and bases. Okay. Okay, there's another question here. Yep, it's the same question. Okay, anything else? भेज दो if you have any question. What else? Most likely ones to come of acid bases. Honestly, it's such a big topic. I think acid bases is the biggest topic in your syllabus, though I'm not sure कि उसमें क्या क्या पूछ सकता है. But if you practice and if you have any questions, तो भेज दें. I also have a worksheet on acids and bases. Let me look for it. Yeah, acids and bases worksheet ये मैं आपके साथ share कर रहा हूँ. This will
definitely clear up any concepts that you are lacking. ठीक है, तो पूरा टॉपिक इसमें हमने रिव्यू किया था. बट इफ़ यू स्टिल फील लाइक कि नहीं आपको पूरा सिलेबस दोबारा देखना है, एंड इफ़ यू हैव टाइम, सो देयर इज़ अ 3 वीडियो सीरीज, ठीक है, विच इज़ ऑलमोस्ट 1 आवर लॉन्ग, मतलब 20-20 मिनट की 3 वीडियोज़ हैं. सो यू कैन गो ओवर दैट अगैन ऑन माई चैनल. What else? Anything else you want to ask? Also, here's the link to the grade 9 video I was referring to. We had it two or 3 days back. Sunday को किया था. Yeah, this is the link to grade 9 revision. Yeah. Question of titration. This was a question on titration. Titration में देखो, the key is titration में हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं. The idea of titration is there is an substance जो ब्यूरेट से आ रहा है, आप उसकी वॉल्यूम कैलकुलेट करते हो प्रैक्टिकली. तो आपने 2 चीज़ों को रिएक्ट करना है, उनको मिक्स करना होगा ऑब्वियसली. आप देखना चाहते हो कि एग्जैक्टली कितना रिएक्ट करना होता है ताकि वो बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यूज़ में कैलकुलेट रिएक्ट करें. सो आप जिस चीज़ के बारे में आपको पता है ना, कॉन्सेंट्रेशन वगैरह का सबका पता है, तो आप उसकी 25 cm क्यूब ले लेते हो पिपेट से, वो आपने डाल दिया कोनिकल फ्लास्क में. फिर आप इंडिकेटर डालते हो टू नो व्हेन टू स्टॉप, एंड देन फ्रॉम द ब्यूरेट यू ऐड द वॉल्यूम जितनी आपको एंड पॉइंट पे चाहिए, जिस पे कलर चेंज होता है. तो अब आपके पास 2 चीज़ें हैं, एक की कॉन्सेंट्रेशन आपको पता है, सो देयर इज द सब्सटेंस 1 एंड सब्सटेंस 2. टाइट्रेशन में होता है कि पहले की कॉन्सेंट्रेशन यू नो, वॉल्यूम यू सेट पिपेट से 25 cm क्यूब, ओके, एंड देन दिस इज फ्रॉम पिपेट. फिर आप दूसरे की वॉल्यूम फ्रॉम ब्यूरेट करते हो खुद से. ब्यूरेट में वो 3 रीडिंग्स आती हैं, उसकी एवरेज लेते हो, और फिर उसकी कॉन्सेंट्रेशन खुद से निकालते हो. कैसे निकालते हो? पहले मोल्स निकालते हो, मोल्स से कॉन्सेंट्रेशन निकालते हो. सारे का सारा यही है, टाइट्रेशन में हमेशा ही होता है. हाँ, अगर आपको टाइट्रेशन का डायरेक्ट कोई क्वेश्चन आ जाता है, यूज द टाइट्रेशन शॉर्टकट. द टाइट्रेशन शॉर्टकट इज CV over N ऑफ द फर्स्ट सोल्यूशन is CV over N of the second solution. इसका मतलब ये है कि आपको जो भी उसने इन्फॉर्मेशन दी हुई है ना, ऑब्वियसली HCl का लेट सपोज सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन होगा, तो HCl की कॉन्सेंट्रेशन इधर लिख दो, उसकी वॉल्यूम इधर लिख दो, और इक्वेशन से उसकी मोल्स इधर लिख दो. इक्वेशन में जो 2-1 नंबर्स होते हैं ना, इक्वेशन में जो मोल रेशियोज होती हैं, दैट कम्स हियर. सिमिलरली दूसरी थिंग सोडियम कार्बोनेट है, सो पुट द कॉन्सेंट्रेशन इफ यू नो इट हेयर, वॉल्यूम इफ यू नो इट हेयर, एंड नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम द इक्वेशन अगैन. So this is the titration shortcut. So whenever you're reacting these 2 things, वो आपको समझ आ जाएगी. Okay, preparation of salt. ठीक है, preparation of salt तो बड़ा सिंपल सा, सिंपल तो नहीं है वैसे, बट काफ़ी मज़े का टॉपिक है ऑनेस्टली. दिस इज सॉल्ट प्रेप. अच्छा, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं? सॉल्युबिलिटी रूल्स आपको याद करने हैं, उसके बगैर प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट नहीं होगी. मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू दे देता हूँ कि प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट कैसे करते हैं. उसके लिए द फर्स्ट थिंग यू नीड टू फिगर आउट इज यू हैव टू आस्क योरसेल्फ 2 क्वेश्चन. इज दिस सॉल्ट सॉल्युबल? अगर तो सॉल्युबल सॉल्ट है तो उसका मेथड और होगा, इनसॉल्युबल सॉल्ट है उसका मेथड और होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इट स्नैप सॉल्ट? अब स्नैप सॉल्ट क्या होता है? सोडियम नाइट्रेट अमोनियम पोटेशियम, ये वो सॉल्ट्स होते हैं जो हमेशा सॉल्युबल होते हैं. देयर आर अदर सॉल्युबल सॉल्ट्स जो कि किसी ऐसी चीज के होते हैं जो स्नैप नहीं होती, तो हम उसको भी, सॉल्युबल तो है लेकिन स्नैप नहीं है, तो हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं. सॉरी, उसको प्रिपेयर करने का मेथड दूसरा होता है. सो दीज आर द 2 क्वेश्चंस यू हैव टू आस्क योरसेल्फ.
अगर वो येस है तो मेथड और है, नो है तो मेथड और है. सॉरी. नाउ इफ इट इज अ स्नैप सॉल्ट, मतलब वो सॉल्युबल है और स्नैप है, तो यू विल डू टाइट्रेशन. टाइट्रेशन क्या होती है? टाइट्रेशन इज you take the cation from alkali, you take the anion from the acid. I'll give an example. मुझे चाहिए sodium sulfate. So cation is sodium, I'll take it from alkali, sodium hydroxide. Or anion is sulfate, so I'll get it from sulfuric acid. So it's a snap salt. Titration करूँगा. Titration क्या होती है आप बताएंगे. Take 25 cm cube of H2SO4 in a conical flask. Then add an indicator. Add the alkali from the burette until the end point, until the color change. अब आपने किया क्या है? You have basically figured out how much volume of base and how much volume of acid you need to do this reaction. अब तो कर तो लिया, बट अभी उसके अंदर इंडिकेटर मिक्स हुआ है. सो देन रिपीट द प्रोसेस विदाउट इंडिकेटर यूजिंग द सेम वैल्यूज. अब सॉल्ट बन गया. नेक्स्ट स्टेप विल बी, अब आपके पास क्या है? यू हैव वाटर एंड सॉल्ट. कैसे सेपरेट करेंगे? इवेपोरेशन. एंड देयर यू गो. आई विल सेंड यू नोट्स ऑफ दिस राइट आफ्टर द लेसन. अच्छा, लेट्स सपोज यू वर डूइंग दिस. The salt is soluble but not snap. तो आपने क्या करना है? There are two methods for that. Either you take excess metal or you take excess base. So I'll give you an example. मुझे magnesium chloride बनाना है. So I can react excess magnesium, क्योंकि magnesium chloride में cation is magnesium, तो excess magnesium या magnesium की कोई भी बेस उठा लो. excess magnesium hydroxide, excess magnesium carbonate, excess magnesium oxide, reacted with acid. अब acid कौन सा होगा? मुझे magnesium chloride बनाना था ना. So chloride is coming from HCl. So now excess magnesium, add it to HCl, then stir, heat, जो भी आपने करना है, सॉल्ट बन जाएगा. फिल्टर. इन दिस केस यू हैव टू फिल्टर. क्यों? वो जो एक्सेस मेटल था उसको सेपरेट करना है ना. फिल्टर कर लिया. नाउ यू हैव सॉल्ट एंड वाटर अगेन. इवेपोरेट. क्रिस्टलाइज करना है तो इवेपोरेट टू क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट. और वैसे ड्राई पाउडर चाहिए तो इवेपोरेट टू कांस्टेंट मास. अच्छा, अब लेट्स सपोज ये भी नहीं है. द सॉल्ट इज इनसॉल्युबल, वो सॉल्युबल है ही नहीं. देन वी यूज द मेथड प्रेसिपिटेशन. सो व्हाट्स प्रेसिपिटेशन? यू टेक वन सॉल्ट ऑफ cation, you take one salt of anion, and then you mix them. So I'll give an example. Silver chloride banana. Silver chloride is insoluble. So I will take one salt of silver. So silver nitrate ले लेते हैं. I will take another soluble salt of chloride. So sodium chloride ले लेते हैं. So both of them should be soluble, okay? So silver chloride बनाने के लिए सिल्वर नाइट्रेट ले लिया और सोडियम क्लोराइड ले लिया. मिक्स देम टुगेदर, सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा. नाउ फिल्टर. क्यों? क्योंकि वो जो सॉल्ट है वो सॉलिड बना ना, वो इनसॉल्युबल है, प्रेसिपिटेट बना. सो फिल्टर, देन ड्राई द रेजिड्यू in folds of filter paper, and that's salt prep. Honestly, that is it. So in this case you take two soluble salts, one for cation, one for anion. और उसके बाद अगले स्टेप्स क्या हैं? ये सॉल्ट बना लिया, उसके बाद उसको सेपरेट करने के लिए टाइट्रेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. आई गो ओवर इट अगैन. सो टाइट्रेशन का क्या होता है? आपके पास हर सॉल्ट में कैटाइन है, एक एनाइन है. ओके, सो कैटाइन फ्रॉम एल्कली
plus anion from acid. So how will you do that? Add acid to conical flask and indicator. That's step 1. Add alkali from burette. मतलब ये लिखो या ना लिखो, मार्क्स का फर्क नहीं पड़ेगा. Until the end point. That end point word is important. Or until there's a color change. Step 3. Repeat without indicator with same volume. ठीक है? क्यों? आपको इस स्टेप से पता चला है कि कितनी वॉल्यूम ऐड करनी है जो जिस पे कलर चेंज हुआ था. नाउ यू डू द सेम प्रोसेस विदाउट द इंडिकेटर, ताकि एंड पे इंडिकेटर मिक्स ना हो, बट यू यूज द सेम वॉल्यूम. वो तो आपको पता है कितनी है. अब सॉल्ट बन गया आपका. नाउ इवेपोरेट, क्योंकि सॉल्ट और वाटर बनना है ना. सो इवेपोरेट कब तक करेंगे? अगर आपको क्रिस्टल चाहिए तो इवेपोरेट टू क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट या पॉइंट ऑफ सैचुरेशन या सैचुरेशन पॉइंट, देन कूल या देन स्लोली कूल. और अगर आपको ड्राई पाउडर चाहिए तो हीट टू ड्राइनेस, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू वांट. तो ये 4 स्टेप्स हो गए. यूजुअली ये 3 मार्क्स का आता है. टाइट्रेशन हो गया. अगर मुझे दूसरे वाला करना है तो सेकेंड मेथड इज soluble but not snap. So इसमें मुझे क्या करना होगा? I will take the cation from metal or base. So वो ऑक्साइड हो सकता है, हाइड्रोक्साइड हो सकता है, कार्बोनेट हो सकता है. And anion from the acid. That is the trick. आपको फिगर आउट कर ले कि ये कौन सी एसिड कौन सी एल्कली यूज करना. So now the first step is mix excess, या mix का word अच्छा नहीं है. Add excess is very important. Metal या जो भी आपने base use किया, add excess to acid, salt बन जाएगा. Stir करना है stir कर लो, heat करना है heat कर लो, जल्दी reaction हो जाएगा. And then उसके बाद वही है, filter करना है, filter. This will remove the extra metal or whatever you have. And then the step 4 from titration. वही चीज़ दोबारा हो जाएगी. अच्छा, और अगर आपके पास precipitation है तो 2 soluble salts, mix them, then filter them. 2 soluble salts, then filter, then dry the residue in folds of filter paper. And that's literally a 4 or 5 or even 3 mark question on salt prep. Ahmed's question is, Assalamu alaikum. After this, can you just do 1 or 2 P2 questions from the exoendothermic reaction chapter? Exoendothermic reaction chapter जो है ना, उसमें it is just the same kind of questions. वो बिल्कुल एक ही तरह के क्वेश्चन बार बार आते हैं. उसकी भी I'll give you a really short video, और वही 15 मिनट की वीडियो वो देख लेना. हमेशा वही आता है. If I can find it though. Okay, I can't find it. Basically exoendo के अंदर, well, yeah, I had a worksheet on this. Again, I'll find it and I'll send it in the group. Basically होता क्या है, एक तो वो आपसे पूछता है कि डायग्राम बना के दो, और डायग्राम में 4 चीज़ें हैं एक्सोएंडो के अंदर. पहली चीज़ है कि whether it's exo or endo, फ़र्क क्या है? In exo you come down to a lower part, and in endo you go up. So first step is it going to go up or is it going to stay low? Second step, label. So
एरो बनाना है और उसका हेड हमेशा या तो हाईएस्ट पॉइंट पे होगा या इस पे होगा, कभी भी रिएक्टेंट पे हेड नहीं हो सकता, ये ज़हन में रख लेना. दिस इज योर डेल्टा एच, दिस इज योर एक्टिवेशन एनर्जी. जो रिएक्टेंट टू टॉप है वो एक्टिवेशन एनर्जी है, दूसरा डेल्टा एच है. सो दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी एंड दिस इज डेल्टा एच. थर्ड थिंग वो कहते हैं कि शो द कैटलाइज्ड वर्जन. सो कैटलाइज्ड वर्जन में डेल्टा एच सेम रहता है, एक्टिवेशन एनर्जी चेंज हो जाती है. सो दैट्स व्हाट दिस इज. सो एक्टिवेशन एनर्जी इज लोअर बट डेल्टा एच इज स्टिल द सेम. अगले क्वेश्चन में वो आपसे पूछता है कि एक्सप्लेन व्हाई दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक या एक्सप्लेन व्हाई दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक. उसका एक ही टेक्स्ट बुक आंसर है. बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक, bond making is exothermic. In this reaction, the energy of bond making is more than energy of bonds broken, so it's exo. अगर वो endo होता तो उल्टा हो जाता. In this reaction, energy of bonds broken is more, energy of bonds made is less. Fourth question क्या होता है, वो आपसे पूछता है कैटलिस्ट की डेफिनेशन या कैटलिस्ट कैसे काम करता है. So catalyst basically provides an alternative pathway with lower activation energy and remains unchanged at the end. That is what the role of catalyst is. Okay, so yeah, that is endo and exo. Anything else? All right, you're most welcome. Okay then, let's call it a day. I really hope, I'll pray for you guys, inshallah you do really well. And remember, ye exams jo hain, these school exams, they are just part of the process. They staircase hai, ye छोटे छोटे steps hain. जो आपकी मंजिल है वो बहुत आगे है अभी. And I'll inshallah be there for you. Just let me know whenever you need any help. Assalamu alaikum. Can you show how to draw SO2 covalent bond, as I can make SO2 sulfur gets 10 electrons? Yeah, that's an interesting question. SO2 sulfur will get 8 electrons, I think, not 10. No, there will be a lone pair. So sulfur will get 10 electrons and sulfur can get up to 12, I think. SO3 के अंदर उसके 12 होते हैं last shell में. Now you might be like, 8 से ज़्यादा कैसे हो गए. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटेंडेड ऑक्टेट. ऑक्टेट रूल जो है ना, इट्स जस्ट अ मेड अप थिंग, कोई इतनी ज़्यादा उसकी वैल्यू नहीं है. इट जस्ट सिंप्लीफाइज थिंग्स फॉर अस इन मोस्ट केसेस. सो इन पीरियड 3 दे हैव एक्सेस टू बिगर शेल्स. सो पीरियड 3 या उससे आगे जो है, दे कैन गेट मोर देन 8 इन द लास्ट शेल एंड दैट्स नथिंग टू वरी अबाउट. ओके, वो होता है बस, दैट समथिंग दैट्स देयर. उसकी रीजनिंग आप ए लेवल्स के फर्स्ट सेकंड चैप्टर में ही समझ आ जाएंगी. अच्छा नहीं, नए वाले सिलेबस के फर्स्ट चैप्टर में ही समझ आ जाएंगी. ओके, एनी अदर क्वेश्चन? All right, I guess that's it. I have a maths class right after this, so I need to go for that as well. Okay, it was lovely having you all here and wishing you all the best. Let me know if you need any help. Take care. Allah Hafiz.